हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है पेपर क्रैकर्स चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको मोटिवेट भी करती होंगी और आपकी स्टडीज़ और आईक्यू को भी इम्प्रूव कर रही होंगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज़ की MCQ है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स? F12, Shift plus F12, Alt plus F12 or Control plus F12, and the correct answer is Control plus F12. Question number 2. The F12 key is used to open dialog box, save dialog box, close dialog box or save as dialog box. Option D, save as dialog box. Question number 3. What is the shortcut for spelling check in MS Word document? F7, Shift plus F7, Alt plus F7 or Control plus Alt7? And option is F7, and the correct answer is F7. Question number 4. What is the shortcut key to open font dialog box? Control plus F, Alt plus Control plus F, Control plus D, Control plus Alt plus D. And the correct answer is Control plus D. Question number 5. What is the shortcut key to close active document in MS Word or Microsoft Word? Control plus F4, Shift plus F4, Control plus Shift plus F4 or none of the above? And the correct answer is Control plus F4. Question number 6. What is the shortcut key to create a copyright symbol? Alt plus Control plus Shift C, Alt plus C, Control plus T, Control plus Shift plus C. And the correct answer is Alt plus Control plus C. Question number 7. What is the shortcut key for Subscript, the selected text? Options are Control plus equivalent to, Control plus minus, Control plus Shift plus equivalent to, Control plus Shift plus minus. And the correct answer is Control plus equivalent to. Question number 8, like this, Subscript. Question number 8. What is the shortcut key for Subscript, the selected text? Control plus equivalent to, Control plus minus, Control plus Shift plus minus, Control plus Shift plus equivalent to. And the correct answer is Control plus Shift plus equivalent to, like this. Question number 9. For hanging indent, Control plus T, Control plus H, Control plus Shift plus H or Control plus Shift plus T, and the correct answer is Control plus T. Question number 10. Columns dialog box can be opened from Alt plus O plus C, Control plus C, Alt plus O plus H, Control plus Shift plus C, and the correct answer is Alt plus O plus C. आज की वीडियो हमारी इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके सजेशंस हमें मोटिवेट करते हैं नए तरीके से वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।